back. I'm anushri and you're watching the video series for industrial relations. So this is the fourth video in the series. In the last video, we started writing questions. I posted some of the questions in the last slide of the last video, and one of the subscribers asked me how to write answers in mails. She found this answer writing part very messy. So I decided to make a video on how to write answers in mains, or how to write the answers to the questions which I post after every video. I mean in the last slide of every video, so that you can start practicing your answer writing, so that you can start writing answers to those questions. If you write answers to those questions regularly and post them on the channel, so that you can have the benefit of the peer review as well as you can have a practice of answer writing. So this video is solely dedicated for that purpose. So in this video, I'll tell you all that is required for you to know for writing answers for your commerce optional. So let's get started. First of all, the first and the foremost condition for writing answers is to read the question. अगर आपको question ही नहीं मालूम है क्या पूछा है, तो आप आंसर सही कैसे दोगे? तो पहली बात ये आती है कि you actually write, or we are actually writing what we know. This is a problem with all the human beings on this earth कि हम हर चीज का वो जवाब देते हैं जो हमें आता है. दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे पहले हमारे दिमाग में एक आर्गुमेंट बिल्डअप होने लग जाता है, वो उस एरिया के अराउंड बिल्डअप होता है जो हमें अच्छे से आता है. इन द सेम वे दैट हैपेंस विद द एग्जामिनर ऑल्सो. एग्जाम में भी आस्किंग सम क्वेश्चन और द अदर क्वेश्चन, बट हम उसे उसी पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं जो पर्सपेक्टिव हमें आता है. सो इन द एग्जाम यू हैव टू राइट व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, नॉट व्हाट यू नो. So always read the question very deeply. Understand the question clearly. Read the question thoroughly without any prejudice, without any preconception. Just read the question. उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो. अगर क्वेश्चन को रीड करने में आपको आधा मिनट ज्यादा लग रहा है तो it is worth. You may spend a half minute less in writing the answer, but you should spend that half minute wisely on reading the question. Okay, once you read the question, then it comes how to analyze the question. You need to understand the question. आपने पढ़ा what, लेकिन आप आंसर why का दे रहे हो. आपने पढ़ा why, लेकिन आप आंसर how का दे रहे हो. Then also the question reading was incomplete. You need to understand the question clearly. Then there are some jargons. These are some words which are used after the end of every question, and each and every these kind of words may actually give you different answer. इन words का अलग अलग मीनिंग होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा. When it comes to examine, then you have to examine the statement. It may come after a statement by a famous author, or it may usually come after a statement which is framed by the examiner. So if it comes after the statement, then you have to examine it. उसका go deeper into the issue. उसका जो implications है, causes है, वो लिखो. You are examining the statement, but in the way the question is demanding. जो क्वेश्चन ने बोला है उसी स्टेटमेंट को आप एग्जामिन करें. लेकिन कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में क्रिटिकली वर्ड यूज हो गया, whether it is critically examine, critically comment or whatever, critically means that you need to see both the positive and the negative of the statement. तो आपको उसमें उसका गुड और बैड दोनों लिखना है. वो क्रिटिकली आ गया, और क्रिटिकली लिखने मतलब आने से यू हैव टू राइट द गुड एंड बैड बोथ ऑफ द थिंग्स. फिर आता है कमेंट. द कमेंट क्या होता है? You are giving your opinion. उसमें they are asking about your opinion. So whatever you are giving, whatever opinion you are giving on that question, you need to make sure that you are illustrating it with some example. You are giving some evidence to it. या फिर आप कोई मॉडल उसके सपोर्ट में बता रहे हो, कोई डायग्राम आपने बनाया है, कोई करंट इश्यू आपने किया है, तो you are giving more and more evidence to your opinion that makes your answer more and more acceptable, and it will fetch you more marks. So again critically comment में दोनों चीज को प्रीव्यू को आपको रिव्यू करना है, गुड और बैड दोनों को. Okay, analyze is deeper than examine. Okay, when it is analyze, you need to go deeper into the particular thing. उसके हर एक पॉइंट को आपको एड्रेस करना है, उसके हर एक पार्ट को आपको एड्रेस करना है. जो क्वेश्चन का हर एक पार्ट है, that has to be addressed, and this is analyze. Okay. Evaluate is similarly, you need to explain the statement. Evaluate. Discuss is like you are more or less discussing the statement. So आप positives भी discuss करें, negatives भी discuss करें, and then finally you are coming up with a balanced view at the end.
So it is similar. Like elucidate, elaborate, explain, these are the same thing. Then comes outcome, consequences, result, implications. इसका मतलब क्या है कि उसका जो वो particular जो पूछा गया है उसका result क्या है, उसका outcome क्या है. All these words mean the same thing कि what is actually the outcome of the particular statement or whatever they are asking. Enumerate is also similar to elucidate, elaborate and explain. Define means you have to give the definitions this time. Whenever they are asking define, so you need to quote somebody, some scholar, some book writer or whosoever you know, some great personality. So you need to define that thing. Then comes opinion, comment and views. It's about your views, how you consider that statement. But it's not just about your fake views or something that you feel like. These are those views which are being supported by evidences, which you have some corroborative evidence, you have some models to support, you have some other current news to support that. So you need to give some evidences, some kind of supporting thing to your comments or your opinion. Purpose, goal, objective, target is about the importance. What is for what purpose the particular thing और जो भी पूछा गया है उसका आपको purpose, goal, objective, target बताना है. So this is how you can understand the question completely कि question ने क्या पूछा है. It is very important. I'm stressing it so much because it is very important that you read the question properly. Read the question properly कि question ने आखिर पूछा क्या है. Don't miss the not the critical और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आंसर बदल जाते हैं, ये छोटे छोटे words don't miss because there is no chance for silly mistakes in exams. You work for so hard for the exams and you cannot just miss your exams because of some silly mistakes. So just make sure that you read the question properly and you understand the question properly. आपने अगर अच्छे से question को पढ़ा है और समझा है, then you can move to the next step, that is the answering part. Now you have to start writing. Then comes the first thing, that means the presentation part कि आपको presentation कैसे करना है, paragraph में देना है, point format में देना है. तो this depends on you, how you like it. You know what matters is that examiner is checking so many answer sheets in a day. So it is better that your answer sheet looks good और जो आप जानते हो उसे आप अच्छे से present कर पाओ ताकि सारी बात examiner तक पहुंच जाए जो आपने पढ़ी है या फिर जो आप जानते हो, ताकि you don't miss something, that examiner know exactly what you know about the question. जिस क्वेश्चन के बारे में जो पूछा गया उसके बारे में आपने सब कुछ लिखा, वो उस तक पहुंच जाए. इसलिए जरूरी है कि आप या तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, जो पॉइंट्स में आप सारे लिख रहे हो, पैराग्राफ में लिखो तो देन ऑल्सो इट्स गुड. इट्स नॉट बैड राइटिंग इन पैराग्राफ. यू हैव टू हाईलाइट the important things so that he need not search. एक तो आपने छोटा छोटा लिखा है, पास में लिखा है, एकदम congested लिखा है और ऊपर से आपने पूरा पैराग्राफ में ऊपर से एक सिंगल पैराग्राफ में पूरा आंसर कर दिया, तो then he'll have to search for the points. Then don't make the task harder for the examiner. Try to make the task easier and easier. कि कोई भी अगर आपके आंसर शीट चेक कर रहा है तो he may actually give you marks. He can understand from your answer. So this is about presentation. It's very essential that you supplement your answers with diagrams. Fact मतलब वो simple एक दो fact अगर आप include कर रहे हैं. It's not like you have to put all the factual information. ग्राफ या फ्लो चार्ट में आपने एक्सप्रेस किया है चीजों को. अगर कोई मॉडल पूछा गया है, इट्स कंपल्सरी एट दैट टाइम दैट यू मेक द डायग्राम. और दिस सेव्स टाइम ऑल्सो. मेनी टाइम्स यू कैन मेक एन डायग्राम एंड यू कैन सेव द टाइम इन एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एंड इट एक्चुअली मेक्स योर आंसर शीट लुक्स more presentable. Secondly, it actually explains your concept more clearly, that examiner understand that there is concept clarity in you. So make sure that you make diagrams and graphs and flowchart in your answers, but don't waste too much time on that, but you should considerably make diagrams. Okay, then more the time examiner takes in checking answers, less the marks. So make the journey of examiner checking your answer sheet easier. It should be easily understandable. No need to add very hard jargons और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश में आप अपने आंसर्स लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है. Write in simple English and make your answer more and more understandable. The answers has to be very direct. ऐसा नहीं कि उसमें खोजना पड़ रहा है कि आंसर कहाँ है. आपको डायरेक्ट अगर उसने जो पूछा है वही आपको लिखना है. दैट मीन्स टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए. वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू केयर ऑफ वर्ड लिमिट्स इवन व्हाइल यू आर आंसरिंग these questions. When I'm like writing the marks that each question carry, so that you get an idea about the word limit. देखिए अगर the question is about 10 marks,
then you have to write around 200 words. तो अब ऐसा होता है कि 200 वर्ड्स में कितने वर्ड्स लिखोगे, एग्जैक्ट 200, यू एवरीबडी नो कि एग्जैक्ट 200 नहीं लिखना होता है, 50 ही एक्सीड की 250 लिख दिया, 300 लिख दिया, बट मतलब 200 तक लिखना है. एंड यू कैंट राइट, यू कैन काउंट ईच एंड एवरी वर्ड, ऐसा तो ऑब्वियसली नोबडी डज. जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट इन अ लाइन हाउ मेनी वर्ड्स यू राइट and in a page how many lines are there. एक छोटा सा, like when you do the answer writing practice you get this thing, you get to know कि कितने words हो जाते हैं. तो एक estimate होता है, nobody counts, you also know that, nobody counts that. So ये क्या होता है, जैसे जो भी मार्क्स है, जैसे 5 नंबर का है तो 100 नंबर का लिखना है, 20 नंबर का है तो 400 वर्ड्स का लिखना है, 5 में 100 वर्ड्स का लिखना है. इस तरह से ये वर्ड लिमिट होती है. देन स्टार्ट द आंसर राइट अवे. देखो जैसे ना एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन, then body and then conclusion. So when we see the answer from the point of view of 200 to 250 words, then you can't devote more than 50 words on introduction. Introduction में बहुत ज़्यादा time नहीं देना है. You can just give an introduction about the definition of the concept that is being asked, the main concept that is being asked, or some kind of fact related to that concept, or the current news कुछ आया है उस concept से related, या कुछ भी आपको उस concept के बारे में मालूम है वो आप लिख दो, लेकिन not more than 50 words. Okay, and then conclusion is very essential because conclusion shows your or think exactly what is, how do you conclude a particular point. When it is critical then तो बहुत important हो जाता है कि conclusion लिखा जाए. Then also the conclusion should not be more than 50 words. तो बीच का body के लिए आपके पास बच गए 100 to 150 words. So in case when you think that you have more to write in the body, then you can avoid the introduction altogether. ओके, ज्यादा आपसे जो एग्जामिनर ने पूछा है वही आपको ज्यादा लिखना है. इंट्रोडक्शन इज जस्ट टू गिव अ स्टार्टिंग टू द क्वेश्चन. ओके, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. लेट्स मूव ऑन. The next is, when you start writing your answers, when you're in the midway of writing the answer, go back to the question. Read the question again. Because it happens many times that when you're writing the answer, you get distracted. Means आप लिखे जा रहे हो, फिर आप धीरे धीरे वो लिखने लग जाते हो जो आपको मालूम है या जो आपको अच्छा लगता है. तो आप उसमें कई बार बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में चले जाते हो. तो it's very essential that you keep reminding yourself कि क्वेश्चन क्या है. उससे you will be on track कि ना एग्जैक्टली मुझे क्या लिखना है, आपको आगे का आंसर फिल इन करने में इजी होगा. सो ऑलवेज गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन सो दैट यू आर राइटिंग द राइट आंसर. ओके, देन कम्स डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. यस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. जो अपन ने बात की, यू शुड गिव सर्टेन काइंड ऑफ, क्योंकि प्रेजेंटेशन वैसे मायने नहीं रखता, योर कंटेंट मैटर्स, लेकिन कंटेंट को दिखाएगा कौन? प्रेजेंटेशन से ही आपका कंटेंट सामने आएगा, इसलिए प्रेजेंटेशन मायने रखता है. योर आंसर हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल. आपको उस आंसर के बारे में जितना कुछ पता है, जितना अलग अलग ऑथर्स का या अलग अलग मॉडल से आप उसको बता पा रहे हो, करंट सिनेरियो से लिंक कर पा रहे हो, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे. करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर पा रहे हो. देन वर्किंग नोट्स. व्हेन यू टॉक अबाउट द पेपर 1 ऑफ this commerce and accountancy optional, तो पेपर 1 में वर्किंग नोट्स आर एसेंशियल बिकॉज प्रैक्टिकल में चाहिए. तो एक कॉन्सेप्ट है थ्योरी इन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल इन थ्योरी. आपने सुना होगा एंड मेनी टाइम्स कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको थ्योरी मेंशन करनी होती है. मतलब यू हैव टू राइट द वर्किंग नोट्स इन डेप्थ, एंड दोज हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे रियली फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट राइट एवरी प्रोविजन इन सच डिटेल, है ना. तो अगर आपने डीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड इन दैट इनकम टैक्स you are excluding an expenditure, then also you have to mention it clearly that you have excluded this expenditure and then perspective why you excluded, and that perspective has to be from the side of the government because this expenditure might like whatever the reason for which this expenditure has been excluded, you have to mention the reason also. CA में तो हम सिर्फ ये बताते थे कि हमने ये expenditure exclude किया है, लेकिन इसमें आपको reason भी बताना आपने क्यों exclude किया है, तो उसी वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि आपका आंसर अच्छे से आ गया, यू विल गेट मार्क्स. दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग ट्रबल फॉर सीएस कि इसमें यू हैव टू राइट थ्योरी इन प्रैक्टिकल. ओके, then comes practical in theory. Practical in theory, all those theories which can be complemented or supplemented with a kind of practical. कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इमेजिनरी एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर कोई करंट लाइफ का एग्जाम्पल दे सकते हो. देन इट विल हेल्प your concept to be more clear to the examiner. So he can test your grip on the subject. So make sure that you do it.
Then underline the keywords and phrases. Obviously, you don't have to use a highlighter or color pencils or anything, but you need to underline the keywords. जिस पेन से लिखे उससे underline कर दो, ताकि the examiner can see कि हाँ ये points हैं इसके, ये important points हैं, इन्होंने ये points लिखे. Even if when he is going, he is taking a glance at your answer, then he can find out कि yes, these are the points. Okay. Then legible, it should be readable. This is very important. It should be readable. Your answer sheet कि पढ़ पाए अगला. अगर उसे पढ़ने में इतनी मेहनत हो रही है, then he will lose interest in your answer sheet, and if he lose interest, he won't give marks. Okay, that much marks. Your answer sheet should be neat. मतलब ऐसा नहीं बहुत सजा के लिखना है. नीट मतलब आराम से स्पेसेस हो उनके बीच में, बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग यू फॉर द कॉपी. आराम से थोड़ा बहुत स्पेसेस हो, एंड पैराग्राफ्स के बीच में लाइंस, एक दो लाइंस छोड़ी हुई हो. द आंसर इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इन वेरियस पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू पार्ट्स. आपने पैराग्राफ्स डिवाइड किए हैं, पॉइंट्स किए हैं, तो इट शुड बी क्वाइट स्पेशियस कि आपने स्पेस भी अच्छे से यूज किया है, बहुत ज्यादा पास में नहीं लिखा है, एंड इट इज क्वाइट नीट. बहुत ज्यादा काटापिटी नहीं है, इट is quite neat. Then your answer sheet looks good to the examiner. So it has to be neat, legible हो, neat हो. कोट्स ना बहुत हेल्प करते हैं. जैसे HR के लिए जो कोट है ना कि नारायण मोती का कि your human resource steps out in the evening and then you have to make sure that they come back, walk out of your office in the evening and you have to make sure that they come back in the morning, like that. इस तरह के कोट्स आप यूज करते हैं, that makes a greater impact on the examiner. So I try to make sure whenever I use a quote in any lesson, I highlight it so that you come to know that this is a quote which you can quote on your examination paper, और आप use कर सकते हो अपने answers में. No need to memorize so many quotes, जरूरी नहीं है. हो सकता है आपको word to word नहीं याद है, then also you can mention the name. I don't need to mention in the inverted commas. You can just mention the name and then you can he said this, like that and that. Okay, in your own words. मतलब you can explain the concept given by the like author, the philosopher or the person, and then you can get marks because you have mentioned a different perspective. You have added a different perspective to your answer. Okay, so make sure that you write quotes and you know what other people have said in this regard, etc. Okay, so this is about writing the answer. Then comes conclusion. When you're concluding the answer, make sure that you have addressed all the parts of the question. Okay, and conclusion is must. Don't forget to write a conclusion. Give a balanced view. एक मध्यम मार्ग जो बुद्धा का होता है उसी को फॉलो करो. किसी के एकदम फेवर में नहीं जाना है, एक्सट्रीम्स में नहीं वर्क करना है. You have to work on the middle path. Okay, give a very balanced answer. आपने 1000 बार सुना होगा तो the same thing. Okay, so I have tried to address so many doubts, or whatever doubts I thought I could think of. I presented before you in this particular PPT. And if you, I hope कि your doubts will be a little bit solved and you can move, you can start writing answers from now. And so in the next video, when I come up with different questions, I expect you to write answers and present those answers on the YouTube channel, and like present it for the peer review and etc., so that you can have in more inputs to your answer, as well as you can actually develop an answer writing practice. So practice, practice and practice. This is what an answer that will make a good answer and improve along with practicing. So this was a small video about how to write answers in mains for your commerce optional. I hope this was little helpful to you. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Subscribe to the channel for the ongoing series on industrial relations for UPSC Commerce. So I'll see you tomorrow on the same channel. Till then, stay healthy and be happy. Bye.